Buenas noches, senor. American 965 leaving 23. $1995 क्रिसमस से कुछ दिन पहले अमेरिकन एयरलाइंस का एक जहाज बोइंग 757 इट्स ऑन इट्स फाइनल अप्रोच टू काली कोलंबिया. Cali approach, American 965. जो पायलट्स हैं वो बहुत ही शांत और रिलैक्स्ड हैं. 965, 9,000 feet. लेकिन उनको ये नहीं पता है कि उन्होंने एक बहुत जबरदस्त गलती कर दी है. Oh, shit! Hold up, baby. वो तकरीबन 10 मील ऑफ कोर्स चले गए हैं और उनको कोई क्लू नहीं है कि अब वो कहाँ पे है. In complete darkness, the jet carrying 163 passengers and crew is moving towards total chaos disaster. Okay, easy. I think we knew that something imminent was around the corner. Up, baby! More! Up! अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 965 एक 9000 फीट के पहाड़ से टकरा जाती है और उसकी गूंज सुनाई देती है पूरी एविएशन इंडस्ट्री में कि कैसा एक दुनिया का सबसे एडवांस्ड प्लेन equipped with the state-of-the-art navigation system and flown by the best skilled pilots in the world crash into the side of the mountain. Take our slot, but well. नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट भामरी, लेकर के आया हूँ एक नए एपिसोड आज आपके फेवरेट शो दुर्घटनाएं डिजास्टर्स का. एक ऐसा शो जिसमें हम चर्चा करते हैं इस धरती पे घटित अलग अलग समय पे अलग अलग दुर्घटनाएं डिजास्टर्स की. और ये शो आता है आपके फेवरेट इंटरनेट रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान पे, जो कि है अ फ्लाइट ऑफ लाइफ. और आज के शो में हम चर्चा करेंगे 20 दिसंबर 1995 की एक घटना, अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 965 की. 20 अगस्त 1995 अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 965 तैयार हो रही है मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूएसए को छोड़ने के लिए, और उसकी डेस्टिनेशन है काली कोलंबिया. उसको ये एयरपोर्ट छोड़ना था 4:40 शाम को, लेकिन वो आधे घंटे डिले हो गई है एट द गेट टू अलाउ द कनेक्टिंग पैसेंजर्स. Surely gonna call us in December. The Dusans only made it just in time. In Miami, they tell us that we have to rush because the plane gonna leave to Cali very soon. Definitely, we were very happy because we know we're gonna fly that night. So you made it. Just in time. Just in time. You won't believe it. Go from New Jersey to Miami. We almost missed the flight. Mercedes Ramirez, along with her parents, also made it to the plane at the last moment. We were on standby, so we weren't sure if our names were going to be called off to actually get on that flight. We heard our names and we were excited because, like, yes, we got on the flight. But it's very old American.
American Airlines की flight 965 finally leaves at 5:14 p.m. तकरीबन 34 मिनट लेट। और जैसे वो टैक्सी कर रहे थे टुवर्ड्स द रनवे, टावर उनको फिर इंफॉर्मेशन देते हैं कि अब और उनको थोड़ा डिले हो जाएगी उड़ने में। रनवे पे बहुत ही ज्यादा सीजनल ट्रैफिक है और उनको वेट करना पड़ता है 1 घंटा और 20 मिनट टारमेक के ऊपर ही। American 965, stand by. Heavy seasonal traffic clogs the runways, and they're forced to wait another hour and 20 minutes on the tarmac. Ready, that's all there is to it. Wait, And American 965. Finally, 2 घंटे बाद American Airlines की flight 965 is given clearance to take off. Right. Fly the runway heading. Clear for takeoff. Merry Christmas. Cleared for takeoff. 27 right. American 965. You do a great job. Good night. कैप्टन निकोलस टिफूरी, जिनकी उम्र है 57 साल, वो इस फ्लाइट के इंचार्ज हैं और वो अमेरिकन एयरलाइंस के वन ऑफ द प्रीमियर पायलट्स हैं, जिनको कि तकरीबन 13,000 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है, जिसमें से 2,000 से ज्यादा घंटे इसी जहाज यानी कि बोइंग 757 का एक्सपीरियंस है कैप्टन निकोलस को। कैप्टन निकोलस अभी 6 दिन पहले ही काली गए थे। 200, the heading. Climb to 16. That's 16 American 965. कंट्रोल्स पे हैं फर्स्ट ऑफिसर डॉमी आर विलियम्स, जिनकी उम्र है 39 साल। वो जबकि पिछले 9 साल से अमेरिकन एयरलाइंस में कार्यरत हैं, लेकिन ये 965 उनका पहला ट्रिप है टू काली, कोलंबिया। ये एक हॉलिडे सीजन है और पूरा जहाज भरा हुआ है विद पैसेंजर्स एंजॉयिंग द क्रिसमस फेस्टिवल। Everybody on that plane was either going back home for the Christmas holidays to visit their family, so I think everybody was just happy and excited to go back. 20 दिसंबर का जो दिन है बहुत ही स्पेशल है फॉर पैसेंजर मर्सिडीज रेमिरेज, जो कि एक स्टूडेंट है इन द यूनिवर्सिटी ऑफ मिसौरी, और ये उनका 21वां जन्मदिन है। और ये ट्रिप जो है वो उनके पेरेंट्स की तरफ से उनको एक बर्थडे गिफ्ट है। Usually we spent Christmas in Kansas City at home, but they wanted to do something special, and we had never spent the holidays with our family in Colombia, so it was a big deal for us. Since we flew standby, I couldn't sit with both my mom and my dad all in one row, so my mother and I were seated next to each other. I was by the window, she was in the middle, and then there was a passenger who was about my age who was in the aisle seat, and then my father was in another row behind us. And so nothing out of the ordinary at all, just a normal flight. मर्सिडीज की मदर के साथ बैठे हैं 19 वर्षीय मोरिसियो रेस, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में स्टूडेंट है। गोंजालो डुसैन, उनकी पत्नी नैन्सी और उनके 2 बच्चे मिशेल और गोंजालो जूनियर भी इन्हीं के आसपास बैठे हैं। We were very excited because the first time, we're going with my family to pass, Christmas over there in Cali. We wanted to see our families, members, brothers, sisters, to see our city again.
2 hours and 45 minutes into the flight, the plane is cruising at an altitude of 37,000 feet on a pre-programmed flight plan to Kali Airport. 36 miles. पायलट्स जो हैं उड़ा रहे हैं बोइंग 757, a state-of-the-art aircraft equipped with the latest computer system. अगर हम appropriate data डालें कंप्यूटर में तो प्लेन का जो ऑन बोर्ड कंप्यूटर है जिसको बोला जाता है फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम, वो पूरे कंट्रोल कर सकता है प्लेन को राइट फ्रॉम टेक ऑफ टू लैंडिंग। और वो सिस्टम जो है पायलट का सबसे अच्छा दोस्त बन सकता है। और जैसा कि अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 965 के केस में हुआ था, उनका सबसे बड़ा नाइटमेयर। काली एयरपोर्ट में पहुंचने से तकरीबन 1 घंटा पहले एक ऑकवर्ड सिचुएशन ने मर्सिडीज रेमिरेस को अपनी सीट चेंज करने पे मजबूर किया और वो पीछे अपने फादर के साथ जाके बैठ गई। My mother had been talking to the college student who was next to her, and I think she was trying to kind of set me up with him because she kept on saying, "Oh, well, my daughter's in college, and my daughter's this, and my daughter's that." So I was very embarrassed. So I got up from my seat and moved to the row behind us, and I sat with my father. ये बहुत ही छोटी सी बात है, लेकिन आगे चल के यही बात उनकी जान बचाएगी। It is a clearless, moonless night with visibility over 6 miles. And that's just how it works. That's our scenario. Captain Tafuri जो है, now he is getting concerned regarding their arrival time in Kali. Brief 1 hour sign in, and you can't move that up at all because it's an FAA thing. According to the FAA regulations, जो cabin crew होता है उनको जमीन पे कुछ मिनिमम घंटे बिताने होते हैं, उसके बाद ही वो फिर से फ्लाई कर सकते हैं। और चूंकि मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ये प्लेन बहुत डिले हो गया था, तो इस वजह से ये फ्लाइट जो है काली भी लेट ही पहुंचेगी। When you want descent, let me know a few minutes early in case there's a language problem, okay? Sure. और अगले दिन सुबह इस क्रू को वापस आना है, तो हो सकता है अगले दिन सुबह भी फ्लाइट डिले हो जाए फ्रॉम काली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। See, we got 136 miles to the VOR and 32,000 feet to lose and slow down to boot, so might as well get started. अगर और कुछ डिले होता है अब, तो उनकी अगले दिन सुबह की फ्लाइट भी प्रॉब्लम में आ सकती है। और अगर ये लोग अपना प्लेन अगले 25 मिनट में लैंड कर देते हैं, so they will beat the deadline. All right, sir. And if you'd keep the speed up on the descent, it'd help us too, okay? Okay. Okay, Gonzalito, let your sister sit beside the window. गोंज़ालो डुसैन है, उनके बच्चे जो हैं वो विंडो सीट के लिए लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि इसका बहुत ही बुरा परिणाम हो सकता है। And I remember I told them before Cali, when the plane started to lose altitude, so we're going to see the valley, the city, very nice with a lot of lights on it, because usually by December, by Christmas time, they decorate, the mountains with different colors, lights and everything. Then they start to fight for the window side. And I was fighting with my brother, Gonzalito. We were fighting for the window. Okay, Gonzalito, let your sister have a chance by the window. And I'm like, oh, I want to see the lights, I want to see the airport. And he got mad.
Okay, Michelito, si pa rin. Go see what your cause are. Good boy, Gonzalito. Okay, Michel, take a look at the lights. Let's go. Come sit. Come sit. Come sit. So we're almost there. Michel, can you see the lights outside the window? Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. We have begun our descent for landing at Cali. It's a lovely evening. As we'd expected, we'll pass a shower or two on the way in. ये सुहानी शाम अब खत्म होने वाली थी। अगले 30 सेकंड में पायलट्स फर्स्ट मिस्टेक करेंगे इन अ सीरीज ऑफ मिस्टेक्स, जिससे कि क्या परिणाम हुआ, आधे से ज्यादा लोगों की जान गई। अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 965 अपने फाइनल डिसेंट पे है। तकरीबन 63 मील दूर है काली से। काली का जो अल्फांसो बनीलो एरेगन एयरपोर्ट है, इट इज at the end of a long valley, और इस वैली के दोनों तरफ हैं पहाड़ी श्रृंखलाएं, और कुछ पहाड़ तो जाते हैं तकरीबन 14,000 फीट की ऊंचाई तक। One of these nuts done? No, thank you. You want your water? You want to wait until we get on the ground about your water? No, I'll wait for the ground. To guide the plane on its pre-programmed flight path, the plane must pass over through some waypoints. ये एक्चुअली में रेडियो बीकन्स होते हैं जो कि फिक्स पोजीशन पे लगाए गए हैं, और एयरक्राफ्ट जो पास करता है इनके ऊपर से, वो इनका सिग्नल कैच कर करके अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है। अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 965 अब एक वे पॉइंट पे रीच कर रही है, पास पहुंच रही है, जिसका नाम है टुलुआ। टुलुआ इज एक्चुअली अ रेडियो बीकन विच इज ऑन द टॉप ऑफ द वैली विच लीड्स टू काली। After Tillua, they should fly down the valley across the last waypoint, which is called the Rosso. उसके बाद they fly past the airport, एक right turn लेते हैं, and then land from the south. She did really well. È molto interessante. È molto interessante, sì. Cali approach, American 965. American 965, good evening. Go ahead. Buenas noches, senor. American 965. काली के एयर ट्रैफिक कंट्रोल में नेल्सन रिवेरा जो है, अब फाइनल अप्रोच को से प्लेन को गाइड करेंगे टुवर्ड्स इट्स लैंडिंग एट द एयरपोर्ट। लेकिन उनके सामने एक प्रॉब्लम है। जो रेबल्स हैं व्हिच आर अपोज्ड टू द कोलंबियन गवर्नमेंट, उन्होंने दे हैव ब्लोन ऑफ द रेडार इंस्टॉलेशंस, और नेल्सन को कोई आइडिया नहीं है प्लेन्स के बारे में, और उनको आइडिया तब ही मिल पाता है कि जब वो प्लेन्स अपनी पोजीशन रेडियो करते हैं, उसके बाद ही वो गाइड कर पाते हैं उनको। The distance DME from Cali? और अब बगैर रेडार के द एयर ट्रैफिक कंट्रोल है, उनको डिपेंडेंट रहना पड़ता है ऑन द फ्लाइट क्रू टू टेल द डिस्टेंस टू द रनवे। The DME is 63. DME होता है दोस्तों डिस्टेंस मेजरिंग इक्विपमेंट, जो कि होता है बोइंग कॉकपिट के अंदर। Roger. American 965 is clear to Cali. Descend and maintain 5,000 feet. Altimeter? 3002. Report Tulu'a. Okay, understood. Clear direct to Cali, VOR, report Tulu'a. Affirmative.
ये एक टोटल मिसअंडरस्टैंडिंग थी। कैप्टन टफूरी समझते हैं कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर उनको बोल रहा है कि डायरेक्ट काली एयरपोर्ट तक पहुंचो और टलुआ के बारे में भूल जाओ, जबकि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का मानना था, वो कहना चाहते थे कि आप टलुआ के पास पहुंचे और हमें बताएं, जिससे कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को प्लेन की पोजीशन के बारे में पता लग सके। To me, the word directly means that he was authorized to go directly to Cali, that there was no delay. Therefore, he had to inform us of his position in Tuluá, because we don't have radar. I needed him to inform me of that exact location. कैप्टन टफूरी कंप्यूटर में पंच करते हैं डायरेक्ट टू काली, और इसका परिणाम ये होगा कि उनके बीच, उनके और काली तक के बीच के जितने भी वे पॉइंट्स हैं वो कंप्यूटर इरेज कर देगा, यहाँ तक कि टलुआ भी इरेज कर देगा जिसके पास वो अभी पहुंचने वाले थे। Put direct Cali for you in there. Okay, thank you. Flight attendants, please prepare for landing. Thank you. And I remember they gave us the order to put the back of the seat straight. I remember that. And everybody was, so happy because we were very close to the city. minutes before their estimated time of arrival at the airport. Go ahead, please. Sir, the wind is calm. एयर ट्रैफिक कंट्रोल इनसे पूछता है कि क्या वो रनवे 19 पे उतरना चाहेंगे You want to shoot the 19 straight in? instead of the assigned runway 01. Yeah, we'll have to scramble to get down. We can do it. Yes, sir. We'll Need a lower altitude right away, though. Roger. The American 965 is cleared to VOR DME. Okay. इस पर जो है पायलट्स बड़े खुश हैं क्योंकि रनवे 19 जो है इट इज द डायरेक्ट स्ट्रेट इन अप्रोच फ्रॉम द नॉर्थ. उनको ये प्रेशियस टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा in order to circle the airport. Approach runway 19. Roto number 1 arrival. Report. लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं है, उनको जल्दी से प्लेन को नीचे लाना है. विलियम्स डिप्लॉय करते हैं स्पीड ब्रेक्स. ये जो ब्रेक्स होते हैं दे आर द फ्लैप्स ऑन द टॉप ऑफ द विंग्स. व्हेन दे आर रेज्ड they reduce the lift of the plane and increase the plane's descent. ये जो split second decision था of landing at the runway 19, उससे कितने ही events trigger off होंगे which will ultimately end into disaster. We'll report VOR. Thank you, sir. Report Tuluá, VOR. Report Tuluá. I've got to give you a Tuluá first of all. You want to go right to Cal or to Tuluá? I thought he said the Rosso 1 arrival. Yeah, he did. We got time to pull that out? अब जो है घटनाक्रम तेजी से चल रहा था कॉकपिट के अंदर. पायलट्स को अब नए वो जो चार्ट्स लोकेट करने थे जो कि रनवे 19 की डायरेक्शन दे सके, उनको प्लेन भी उड़ाना था साथ में और ये डायरेक्शंस जो थी कंप्यूटर में अपने फीड भी करनी थी. And Tuluá 1 Rosso. Yeah, there it is. See, that comes off Tuluá. अब वो बिल्कुल कंफ्यूज हो चुके हैं पायलट कॉकपिट के अंदर. Can American Airlines 965 go direct to Rosso? And then do the Rosso arrival, sir. Affirmative. Take the Rosso 1 and runway 19. The wind is calm. All right, Rosso. The Rosso 1 to 19. Thank you, American 965. Report Tuluá at 21 miles and 5,000 feet. Okay, report Tuluá.
एयर ट्रैफिक कंट्रोलर उनसे बार बार यही पूछ रहा है कि वो रिपोर्ट करें जब वो टलुआ पहुंचते हैं, लेकिन क्योंकि वो इरेज कर चुके हैं टलुआ अपने कंप्यूटर से, तो उनको कुछ नहीं समझ आ रहा है कि वो कहाँ पे है इस वक्त। कैप्टन टफूरी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से पूछते हैं कि वो टलुआ को भूल के रोजा के बाद में रिपोर्ट कर दें, जो कि एयरपोर्ट से पहले उनका लास्ट वे पॉइंट होने वाला है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर उनसे बार बार यही पूछ रहा है कि वो टलुआ जब पहुंच जाएं तब वो रिपोर्ट करें, लेकिन रेडार के बिना उन्हें ये नहीं पता है कि प्लेन जो है ऑलरेडी पास कर चुका है टलुआ और वो सीधा इट इज डाउन द वैली टुवर्ड्स द एयरपोर्ट। अब कैप्टन टफूरी ने एक और फेटफुल डिसीजन लिया। अब क्योंकि ये डिसाइड हो गया था कि उनको रोसो वे पॉइंट को पास करना है, वहां तक पहुंचना है, तो वो अपने कंप्यूटर में आर अक्षर टाइप करते हैं और कंप्यूटर रिस्पॉन्ड करता है बाय गिविंग द लिस्ट ऑफ मोर देन 10 वे पॉइंट्स जो कि आर अक्षर से शुरू होते हैं। नॉर्मली रोसो जो सबसे पास था उनके, वो सबसे ऊपर होना चाहिए था, लेकिन उस रात वो सबसे ऊपर नहीं था लिस्ट में और कैप्टन टफूरी ये नोटिस ही नहीं करते और वो दबा देते हैं एग्जीक्यूट बटन। मील प्रति घंटे की स्पीड से और तकरीबन डिसेंड करती हुई तकरीबन 1300 फीट पर मिनट की रफ्तार से अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 965 अब चल पड़ती है एक नए और बहुत ही डेडली कोर्स पे। I never imagined that they were deflecting the route in addition to losing altitude. Because I didn't have radar. प्लेन के कॉकपिट में पायलट्स को ये ज्ञान ही नहीं है कि उन्होंने क्या कर दिया है। वो बिजी है चार्ट्स पढ़ने में रिगार्डिंग दी रनवे 19 और प्लेन चल पड़ा है उनके एक अनजान रास्ते के ऊपर। तकरीबन 1 मिनट से प्लेन उनका पहाड़ों में चल रहा है और अब जाके कैप्टन टफूरी और उनके फर्स्ट ऑफिसर विलियम्स नोटिस करते हैं कि उनका प्लेन उन्हें वहां लेके जा रहा है जहां पे वो बिल्कुल भी जाना नहीं चाहते। Let's go right to Tallulah first of all, okay? Yeah, where are we headed? 17-7. इस गुप्त अंधेरे में कैप्टन टफूरी को कुछ नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। टफूरी, कैप्टन टफूरी, वो एक सिस्टम से स्विच करके कंप्यूटर के दूसरे सिस्टम पे चलते हैं और उसके बाद वो मैनुअली फ्रीक्वेंसी टाइप करते हैं टलुआ बीकन की। वो ये जानते हैं कि अगर वो किसी तरह टलुआ बीकन को ढूंढ पाते हैं तो उन्हें समझ आ जाएगा कि वो कहाँ है और कैसे आगे बढ़ना है। Okay, I'm getting it. 17-7 just doesn't seem right on mine. I don't know why. Left turn. So you want a left turn back around to ULQ? Nah, hell no. Let's press on to... Press on to where, though? Tallulah. Less than 2 minutes away from the impact and totally lost, कैप्टन टफूरी फिर भी डिसाइड करते हैं अपनी इस डूम्ड अप्रोच को फॉलो करने के लिए। Let's go to Cali first of all, okay? We fucked up here, didn't we? Yeah. Go direct CLO. How did we get fucked up here? Come to the right now. Come to the right now. पायलट्स को इस बात का ज्ञान नहीं है कि जब
उनका प्लेन ऑफ कोर्स हुआ था तो वो पहाड़ों के ऊपर से गुजर गया था और वो अब एक दूसरी वैली में गुजर रहे हैं जो कि उस वैली के पैरेलल है जिसमें कि होके उन्हें जाना था काली। केबिन में पैसेंजर्स को बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है कि अगले 60 सेकंड के अंदर जो उनका प्लेन तकरीबन 2010 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रहा है वो क्रैश कर जाएगा। We're almost there. It's that fucking Tallulah I'm not getting for some reason. See, I can't... Okay, now. No. Tallulah's fucked up. Okay, yeah. But I can put it in the box if you want. I don't want Tallulah. Let's just go to the extended center line of... Which is Roseau. Roseau. Well, why don't you just go direct to Roseau then, all right? Okay, let's... I'm gonna put that over to you. पायलट्स अब डिसाइड करते हैं कि वो टलुआ को बिल्कुल भूल जाएंगे और सीधे एयरपोर्ट की तरफ रुख करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि उनके और एयरपोर्ट के बीच में है पहाड़ों की दीवार। 965 altitude. 965. 9,000 feet. Roger. Distance now. तभी प्लेन का ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम उनको सिग्नल देता है कि they are about to crash. 965, this is Cali approach. Can you hear me? Y ya no me contestó. He didn't answer. No me volvió a contestar. He never answered again. Easy does it. Easy does it. I could feel that we were just violently just going up. And I felt like I was in a roller coaster ride or something. And the turbulence was absolutely horrible. And by that time, people were screaming and everybody knew on the flight that something was very wrong. Too low. Terrain. Easy does it. Easy does it. Up, baby. Instinctively, I reached over and I grabbed my father's hand and I put my head in my lap. In my mind, I just kept on thinking, come on, just straighten it out, straighten it out. Up, baby. More, more. Up, up, up. और यही आखिरी शब्द थे जो रिकॉर्ड हुए थे on the cockpit voice recorder. American 965, this is Cali approach. Can you hear me? रात के 9:42 पर American 965, can you hear me? अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 965 जो कि अपने फाइनल अप्रोच पे थी काली एयरपोर्ट पे, वो एकदम गायब हो जाती है। American 965, this is Cali approach. Can you hear me? Nunca me había pasado eso, era la primera vez. I never experienced anything like this before. This was the first time that I lost a plane and the crew was not responding. Es muy difícil asimilar. It is very difficult to grasp the moment. Cuando la aeronave no contesta, uno when the mira plane hacia didn't afuera, answer, que nosotros I trabajamos looked en el outside control, from the y control miramos tower. hacia afuera. En I ese could momento see from empezamos a there the buscar. sky. El tiempo estaba muy bueno. I started to look for the plane. The night was clear, and I thought I could see the plane coming. But in this case, I never saw the plane. Nunca vi la aeronave.
जो प्लेन का इंटेंडेड अराइवल टाइम था उसमें एयरपोर्ट मॉनिटर्स में अब दिखाई देने जा रहा था 7 मिनट का डिले। और वहाँ पे फैमिली मेंबर्स और वेल विशर्स रिलेटिव्स सब वेट कर रहे थे प्लेन के लैंड होने का, जिससे कि वो अपने प्रियजनों से मिल सके। और जैसे जैसे वो अराइवल टाइम चेंज होता गया, ये हवा फैल गई पूरे एयरपोर्ट टर्मिनल में कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने उस प्लेन के साथ कांटेक्ट खो दिया है। और एक ही क्षण में खुशी का माहौल बदल जाता है इन टोटल शॉक, और सुनाई देती है सिर्फ रोने और चिल्लाने की आवाजें जब ये बात पता लगती है कि फ्लाइट 965 क्रैश कर गई है। जो लोग रहते थे उस शहर बोगा में, जो कि काली के नॉर्थ में था, वो रिपोर्ट करते हैं कॉल कर करके कि उन्होंने एक जबरदस्त धमाका सुना था। और रेस्क्यू टीम्स जल्दी ही इस शहर में पहुंचती हैं, जो कि इट लाइज एट द बेस ऑफ द माउंटेन रेंजेस, जो कि जाती हैं तकरीबन 10,000 फीट की ऊंचाई तक। सुबह के 3 बज रहे हैं इस वक्त, तकरीबन 6 घंटे का टाइम बीत गया है जबकि क्रैश हुआ था। जो पहली रेस्क्यू टीम्स हैं वो अब ट्रैक कर रही हैं ऑन द साइड ऑफ द एल्डरलूविया माउंटेन। देयर आर नो रोड्स, इट इज कंप्लीटली कट ऑफ। और उस टन्स ऑफ ट्विस्टेड मेटल के बीच हैं 21 वर्षीय मर्सिडीज रेमरोस, जिनकी आखिरी मेमोरी बिफोर द इम्पैक्ट थी कि उन्होंने अपने फादर का हाथ पकड़ा था, और जो पीछे अंदर आवाजें सुनाई दी थी उन्हें फ्रॉम द बैक ऑफ द प्लेन, फ्रॉम द टेल सेक्शन ऑफ द प्लेन, it as it scraped or touched with the trees, जबकि प्लेन का जो टेल सेक्शन था वो पेड़ों से टकराया था। The next memory I have is the next day. It's daylight. I wake up and I see the sunlight around me, and I don't know where I am. And what's around me looks like a landfill, like a trash dump. And so as I'm laying there, I'm thinking, where in the world am I? Mercedes is critically injured with severe internal injuries and a shattered leg. Help! Is anybody out there? Help me! वो 19 वर्षीय कॉलेज स्टूडेंट मोरिसियो रियाज भी इस हादसे में बच गए थे, और वो रिस्पॉन्ड करते हैं जो मर्सिडीज की चिल्लाने की आवाजें थी उनको। Can you move? I can try. I'm not sure. My leg is bent backwards. Okay. Please. Okay, hold on. Hold on. Okay. Help me, please. Okay. The only way for me to get out was having to drag myself over people. And I remember this lady who I had to drag myself over, and I'll never forget her. Looking back, I think, oh my goodness, that was someone's mom, or that was someone's sister, or someone's wife. But at that time, she was just an object that I needed to get over to get out.
Can you move? Can you stand up? I think my leg is broken. Okay, we'll try. Okay. Okay. 1, Okay. 2, 3. And when he lifted me was when the first time I actually felt pain. It just felt like an electrical current going up and down my legs. So he laid me back down, and then he went off to try to find help. Okay? Okay. Just stay here. Okay. 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 Oh. Okay. Okay. Help! Is anybody out there? While I was laying there, more of the thoughts that were coming into my mind was, why me? Why did this happen to me? जब दिन निकलता है तो कोलंबियन एयरफोर्स सर्च एफर्ट्स शुरू करती है, और वो उससे पहले शुरू नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके पास नाइट विजन इक्विपमेंट नहीं था। और जमीन पे जो रेस्क्यू टीम्स की जो सारी रात चलती रही थी, वो दे आर नाउ अप्रोचिंग द समिट ऑफ द एल डेलुविया माउंटेन। When I wake up, I start to feel the pain in my back. Then when I hear the sound of the helicopters, I realize something happened. I start, to feel panic. Help me! Someone please help me! Daddy, I'm here. Papa. Michelle. गोंज़ालो डुसैन की 6 वर्षीय बेटी मिशेल, जो कि अभी भी अपनी सीट में स्ट्रैप्ड है, वो अपने पिता के इन आवाजों का जवाब देती है। Ow! Ow! My leg hurts. When the plane crashed, my legs, I had my seatbelt on, and I guess the crash was so deep that my legs like speared into the ground. Okay. I tried to move myself, but my legs hurt. They hurt really bad. I couldn't pick myself up. Daddy, it hurts. Okay, Michelle. I'm going to get some water for you soon and bring it back, okay? Then I try to crawl more to try to get out. Despite severe back injury, Dusan manages to crawl to an open section of the fuselage. I saw a hole behind me, and I said inside me, God, help me to get out from here. Help us! Over here! Help us! When I get up of the fuselage of the plane, Papa, I remember my son talk to me. Gonzalito! here. Gonzalito! And he say, Father, help me. Gonzalito! और जबरदस्त कोशिश के बाद भी गोंज़ालोस अपने बेटे को ढूंढ नहीं पाते इन दैट wreckage. Gonzalito! और जो बेटा जिन्होंने उनके इन आवाजों का जवाब दिया था, ये जानते हुए कि वो इस पहाड़ से पैदल नीचे की तरफ नहीं जा सकते, जो सर्वाइवर्स हैं इस भयानक क्रैश के, वो अब जानते हैं कि उनका बच पाना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि टेम्परेचर जो है बहुत तेजी से नीचे की तरफ जा रहा है और विदाउट प्रोटेक्टिव क्लोथिंग वो बच नहीं पाएंगे ज्यादा देर तक इस पहाड़ पे। Stay awake for Papa, okay? Okay, Michelle? दिन के सुबह से ही कोलंबियन एयरफोर्स जो है हर संभव कोशिश कर रही है टू लोकेट द क्रैश साइट, पर उनको अभी तक सक्सेस नहीं मिली है इस मामले में।
और जैसे जैसे क्षण बीत रहे हैं, जो 4 सर्वाइवर्स बचे हैं इस प्लेन क्रैश के, जो कि खुद बहुत बुरी तरह जख्मी हैं, उनका बच पाना भी मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन कुछ देर के बाद ही एक ब्लैक हॉक चॉपर का क्रू उस क्रैश साइट को ढूंढ लेता है। I could see the helicopters perfectly from where I was at, and even though I could see them perfectly, I didn't know if they could see me. When I saw the helicopter very close to the trees, to the top of the trees, I started moving the blanket. I started moving the blanket. Then so I said, "Oh, they saw me. They're coming for us." क्रैश के तकरीबन 8 घंटे बाद और बहुत बुरी तरह जख्मी और उन जबरदस्त ठंड के बीच में, the survivors of the American Airlines flight 965 are going to be rescued. People finally know that we're here, and they're finally here to rescue us after so many hours of being stuck on that side of that mountain. So seeing them was one of the greatest things ever. They came and they throw a rock, and the people start to descend. And I was so happy because I feel that they're gonna help us. The first thing I told them, my son is alive. My son is alive, but I don't know where he is. Help me to find him, please help me to find him. And my daughter is alive, I told them. She's inside the fuselage. और जैसे ही रेस्क्यू टीम नीचे पहुंचती है तो वो डिवाइड हो जाते हैं। एक बंदा ढूंढने लगता है मिशेल को और दूसरा बंदा ढूंढने लगता है गोंजालो जूनियर को। और गोंजालो कहाँ मिलते हैं? He is found hanging from a branch in a nearby tree. और पिछले कितने घंटों से वहां वो लटके हुए हैं and his condition is now very grave. मोरिसियो रियस जो है वो पहले इंसान है जिनको कि एयरलिफ्ट किया जाता है उस पहाड़ से। और a low cloud cover grounds the chopper and it delays the removal of the other survivors from the face of the mountain. जब वो मिशेल डुसैन की कंडीशन देखते हैं और ये डिसाइड और उनको लगता है कि वो ये इंतजार सहन नहीं कर पाएंगी, तो जो वॉलंटियर्स हैं वो एक मेकशिफ्ट स्ट्रेचर बनाते हैं फ्रॉम द पीस ऑफ द रेकेज और वो मिशेल को पैदल ही उस पहाड़ से नीचे की तरफ उतारना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही मिशेल डुसैन उस पहाड़ी की चोटी को छोड़ती हैं तो मौसम जो है क्लियर हो जाता है और बाकी सर्वाइवर्स उनको एयरलिफ्ट करके रिमूव किया जाता है टू द बेस कैंप halfway up the height of the mountain और उसके बाद हॉस्पिटल फॉर इमरजेंसी सर्विसेज। अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 965 के क्रैश करने के तकरीबन 13 घंटे से ज्यादा समय के बाद मिशेल डुसैन आखिरी सर्वाइवर हुए जो कि उस पहाड़ के जंगलों से निकल पाती है। सर्जन्स जो है हर संभव कोशिश करते हैं कि मिशेल की भाई की जान बचाई जा सके, लेकिन ऑपरेशन टेबल के ऊपर ही वो दम तोड़ देते हैं बिकॉज ऑफ मैसिव इंटरनल इंजरीज। I don't think that there is any medical explanation or scientific explanation. There is no explanation. That out of
159 people that were strong and like tough, that me, a little girl, a 6-year-old girl, could survive out of so many people that were so much stronger than me. I just thank God so much. जो 163 पैसेंजर और क्रू इस प्लेन पे सवार थे, उसमें से सिर्फ 4 ही बच पाए इस हॉरिफिक क्रैश में से। इन्वेस्टिगेटर्स बाद में इस क्रैश को लेबल करेंगे एज अ नॉन सर्वाइवेबल इवेंट, और जो बचे थे लोग वो एक साथ ही बैठे हुए थे विद इन 2 rows ऑफ ईच अदर और ऑन टॉप ऑफ द विंग। जो गर्डर्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग गर्डर्स जो कि विंग्स को कैरी करते हैं, वो बना देते हैं इस हिस्से को द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट इन द प्लेन। लेकिन इन सब के बावजूद मर्सिडीज रेमरेज ने अपने पेरेंट्स को खो दिया था और उनकी 21वीं जन्मदिन के दिन। December 20th, 1995, my life changed forever and has never been the same ever since. There was 160 people on that flight who, the moment that plane hit that mountain, all their hopes and dreams were instantly lost. But for some reason, I've been given a second chance at life, and so I'm going to try to make the best of it. जब ये 4 सर्वाइवर्स को सक्सेसफुली इवैक्यूएट कर दिया गया, तो उसके बाद काम शुरू हुआ ऑफ रिमूविंग 159 बॉडीज, उन लोगों की जिन्होंने इस हादसे में जान गंवाई थी अपनी। इन्वेस्टिगेटर्स अब इस क्रैश साइट पर पहुंचने लगे थे और उनके सामने एक बड़ा सवाल था कि एक most modern airline with the most advanced technology, with the state of the art technology, कैसे वो अपने कोर्स से हट जाए और फिर उसके बाद वो क्षतिग्रस्त हो जाए, वो भी तकरीबन 35 मील दूर एयरपोर्ट से। The investigation was headed by Aeronautica Civil, an equivalent to the FAA of the US, और इन कोलंबियन इन्वेस्टिगेटर्स को असिस्ट कर रहे थे a team from the American NTSB. The wreckage and debris report indicated that the airplane actually impacted the eastern side of the mountain as it was trying to proceed back west to get into the valley, and the main body of the wreckage cleared the mountain top, or the ridge I should say, and landed over on the western side, which is inside the valley area. और उसमें थे Dave Ivy. Also following the investigation was Dave Simon, an airline captain who knew the Kali approach very well. In the days that followed the crash, the industry was shocked. They were shocked because they didn't know how could a sophisticated airplane like the 757, flown by a well-respected international carrier like American Airlines with well-trained crews, get so far off course. Nobody could figure out how did it happen, why did it happen. Sabotage and mechanical malfunctions were ruled out quickly. Investigators ने अपना ध्यान केंद्रित किया on the actions of the flight crew, और इस प्लेन के ब्लैक बॉक्स का मिल जाने ने भी एनेबल किया कि इन्वेस्टिगेटर्स अब अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 965 के वो आखिरी क्षण सुन पाए और उससे पता लगा पाए कि क्या आखिर हुआ था उन आखिरी क्षणों में अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 965 में। There is never one single item that
or error that typically brings an airplane down. There's an error chain, and a chain is made up of many links. The airplane was en route to Cali. As they were approaching from a distance out, the controller offered them a straight-in landing. Are you able to approach runway 19er? Would you like to shoot the 19 straight in? Yeah, we'll have to scramble to get down. We can do it. When they first accepted the approach, the first officer remarked that we do need to get down in a hurry in order to accomplish this. Yes, sir. We'll need a lower altitude right away, though. At the time the crew accepted the approach to runway 19, they were too high, too fast, and too close in to safely make this approach. To lose altitude, the first officer deploys the speed brake. और ये उनका action, it will haunt them in the final moments of the flight. The fact that they accepted that runway put the crew in a rushed and hurried manner. Maybe at Tallulah, first of all. You want to go right to Cal or to Tallulah? I thought he said the Rosso 1 arrival. Yeah, he did. We got time to pull that out? फ्लाइट क्रू को अब अपने चार्ट्स को स्टडी करना है और ये डाटा अपने कंप्यूटर में भी फीड कर रहा है और जबकि उनका प्लेन मूव कर रहा है 5 मील प्रति मिनट की रफ्तार से ज्यादा. And when you start to rush and you can't prepare in an adequate amount of time, then additional errors start to occur. Because they're rushed and in a hurry and scrambling, they then make a dangerous request. Can American Airlines 965 go direct to Roswell? And then do the Rosso arrival, sir. Affirmative. Take the Rosso 1 and runway 19er. When the controller said affirmative, take the Rosso 1, he meant use the Rosso 1 arrival procedure, although the crew thought he meant to go direct to Rosso. That's not a good idea because to proceed direct to Rosso is the last point just before the runway. And Rosso is the last point before landing, not the first point that you should be targeting. And this miscommunication really dealt with the pilot believing one thing and the air traffic controller believing another. That was another link, in my view, that was part of the error chain. Where are we? The crew looks at their charts in front of them, and they see the fix Rosso, and it is identified by the letter R. So they naturally put R into the computer, thinking it will take them directly to Rosso. कंप्यूटर पायलट्स को a list of targets देता है starting with the letter R, लेकिन उनमें से एक भी रोसो नहीं है. Habit has shown, and the system is designed to place the one that is closest to your airplane first. And so here was an R that showed up first, and he selected that. A map display जो कि पायलट के सामने होता है वो एक कोर्स बताता है जो कि पायलट ने सेलेक्ट किया था और इस बार वो लेके जाएगा towards the left hand side, towards the mountains. According to American Airlines procedure, prior to executing an input such as this to select the R, you confirm with the other pilot, does this look correct to you? 965, 9,000 feet. This clearly was not done. If it had been, they would have seen a dotted line showing a provisional path from the nose of the airplane, turning and going back to about their 7 o'clock position. और कैप्टन टेफोरी ने जल्दी में ही वो execute बटन को भी दबा दिया था. In aviation, we call that fast-fingered Freddy. When you don't confirm anything, you're in a big hurry to punch something in the computer, and you don't confirm where it's really going to take you. Yeah, it's a left turn. Yeah, I gotta identify that fucker, though. Unfortunately, the crew does not know that R stands for another fix that is 132 miles away behind them at about their 7 o'clock position,
and that's where the airplane starts to go to. American Airlines की फ्लाइट 965 के फ्लाइट क्रू ने बिना जाने प्लेन को उसकी इंटेंडेड डायरेक्शन से हटा दिया है और वो मोड़ दिया है टुवर्ड्स मॉर्टल डेंजर. Where are we? The plane was simply doing what it was programmed to do. In this case, it's to fly to Bogota, 130 miles away. 1 minute into the turn, the pilots are unaware कि उनका प्लेन काली से दूर मुड़ गया है और it is going towards danger. The first officer's getting the charts out, the captain's getting the charts out, they're trying to tune radios. No one's flying the airplane, no one's watching what happens, and they assume that the automation is going to take care of them. Sometimes it will, but in this case it didn't. Where are we? We're going out to... Let's go right to Tallulah, first of all, okay? Yeah, where are we headed? 17-7, ULQ. What's with the ULQ? What happened here? There's an old saying in aviation, never point an airplane someplace that your brain hasn't been 5 minutes earlier. The American 965, distance now? What did you want, sir? Distance DME? In this case, the airplane got in front of them. It was flying what was selected. And in fact, it was flying beyond the pilot's recognition of where it was supposed to be traveling. The pilots had lost what is called as situational awareness. Left turn. So you want a left turn back around? No, to hell ULQ. no. Let's press on. Well, we're pressing to where, though? Tallulah. That's a right U. Once they became unsure of their position, once they became confused and disoriented, that's the time to click off the automation and to basically abandon the approach, climb to the minimum safe altitude, and to go to Cali. Right. Let's go to direct to Cali. 965 altitude. Instead of abandoning the approach and gaining safer altitude, American Airlines की flight 965 continues on its deadly descent. और जब pilots को signal मिले ground proximity sensor से कि वो crash करने वाले हैं जमीन के साथ, तो first officer विलियम्स ने जो है ऑटो पायलट को एकदम 1 मिनट के अंदर डिसएंगेज कर दिया, लेकिन वो स्पीड ब्रेकर्स के बारे में भूल ही गए जो उन्होंने पहले डिप्लॉय किए थे. 965, this is Cali approach. Can you hear me? और जो ऑफिशियल रिपोर्ट आई थी उसके मुताबिक कि अगर पायलट्स ने अपने स्पीड ब्रेक्स को लोअर कर दिया होता तो वो उन पहाड़ों से बच के निकल जाते और काफी जगह नीचे रह जाती उनके और पहाड़ों के बीच में. This accident is known as a CFIT accident, which means controlled flight into terrain. By that I mean the airplane was controlled by the crew, and it was a perfectly normal functioning airplane, and the crew flew the airplane into the mountain. It's one of the leading causes of accidents over the last 100 years, and still is a problem. Both these pilots were experienced pilots flying the 757 for American Airlines. And both these pilots were good pilots. And I think it's like anything else. Two good pilots were led astray by a problem that they were trying to figure out. And at the time, they failed to do the basic thing, fly the airplane. जो कोर्ट की रूलिंग आई थी उसके मुताबिक the pilots had shown willful misconduct during the approach to the Cali airport. Survivor Mercedes Ramirez, जिन्होंने अपने दोनों माता पिता खो दिए थे, she continues to deal with the tragedy. I think this was a classic
textbook case of everything you should not do when flying a plane. Hopefully it's a wake-up call to pilots that no matter how many times you've flown to a city, you just have to be alert and aware, because every little move that you make, you have the lives of people in your hands. तो दोस्तों, इसी के साथ खत्म होता है हमारा आज का एपिसोड आपके फेवरेट शो दुर्घटनाएं डिजास्टर्स का। और ये शो सुन रहे थे आप आपके फेवरेट इंटरनेट रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान पे, जो कि है अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। और आज के शो में हमने चर्चा करी थी 20 दिसंबर 1995 की एक घटना, जिसमें कि एक प्लेन क्रैश हुआ था, अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 965, जिसमें कि 159 लोग मारे गए थे उस क्रैश में। अगर आपको मेरे शो के रिगार्ड्स कोई फीडबैक देना हो तो आप मुझे मेल सेंड कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी है bhambri.r@gmail.com, यानी कि bhambri.r@gmail.com। तो दीजिए इजाजत आपके दोस्त, आपके होस्ट भामरी को समेटने की आज का शो। मिलूंगा मैं आपसे अगले हफ्ते ठीक इसी दिन, ठीक इसी समय और ठीक इसी इंटरनेट रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान पे। और शो होगा आपका फेवरेट शो दुर्घटनाएं डिजास्टर्स। और करेंगे हम चर्चा अगले शो में एक नई दुर्घटना डिजास्टर की। सो नमस्कार, शुभ रात्रि, शब खैर, गुड नाइट, गॉड ब्लेस।